Hi all, welcome to Scientific Investing. As some of you know that I have collaborated with Sanjay Saraf sir, where we are starting a program for financial analysts, and I'll be taking modules related to AI. I'll be taking modules related to sector analysis. So recently, Sanjay sir and we did one online webinar for the students just to showcase the capabilities AI holds in the field of investing and why the financial analyst must embrace AI. So I'm putting the recording of that event on this YouTube channel. Whether you are an aspiring student looking for a career in finance, as well as if you are an investor who wants to leverage AI, this video will give you a very good idea of the use cases of how to implement AI and the capabilities of AI in your day-to-day investing and research life so that you can make better use of it. So make best use of the video. Thank you. So, good morning, everyone, and a very warm welcome to today's special webinar on the Analyst Stack program, brought to you by the Sanjay Saraf Educational Institute, SSEI. The Analyst Stack program is designed to help learners build strong practical skills at the intersection of finance, data, and technology. It focuses on developing an end to end analytical mindset from understanding financial markets to applying modern tools, AI techniques, and data driven framework. Whether you are a beginner or already exploring the world of equities and analytics, Analyst Stack equips you with the multidisciplinary capabilities needed to grow in today's rapidly evolving financial ecosystem. So, before we move on to introducing our distinguished speakers for this webinar, we would like to begin with a short video that captures the essence of the Analyst Stack program. This video offers a quick glimpse into how the program integrates finance, data, and technology to help learners build a strong, future-ready analytical foundation. There is a massive gap between academic theory and what the finance industry actually demands. Bridging that gap requires learning from the source. Introducing the Analyst Stack, the only program taught entirely by industry practitioners, not just academics. We take you from financial modeling to deep practical application. We dive into 15 specific Indian sectors: retail, banking, pharma. You master the actual business models used on the job. Then we future-proof you. You will integrate AI into your workflow using LLMs for real-time research and risk assessment. 15 plus sector primers, 70 plus sessions, 5 months. Who is this for? Whether you are a fresh graduate or a working professional looking to pivot, this is how you stand apart from the competition. Plus, a dedicated career module powered by industry experts, designed to make your resume interview ready and your preparation industry relevant. Stop just learning, start performing. Become a value-adding analyst from day zero. Analyst Stack, empowering your future. Enroll now, and for any further queries, you can speak to our expert counselors. So I hope you like the video. Okay, now, so it's my privilege to introduce our esteemed speakers for this session. First, we have Sanjay Saraf sir, the founder of SSEI and a mentor trusted by lakhs of learners across India and beyond. Known for transforming the landscape of finance, education, Sanjay sir has consistently empowered students and professionals to build deep, industry-relevant expertise in areas such as financial market, risk management, and analytics. His vision for integrating technology with financial learning has guided the creation of programs like this Analyst Stack, ensuring every learner is future ready. Joining him today is Saurabh Kumar, founder of Scientific Investing and one of the prominent voices in the world of data-driven equity research. Saurabh brings rich experience from global organizations including EY, HP Enterprise, and TCS. He has been recognized among the top 40 under 40 data scientists by Analytics India magazine in 2019. With that, let us begin to be an insightful and enriching session. Over to you, Sanjay sir and Saurabh sir. Thank you so much, Shubhkan ji, for the introduction. And thank you, Saurabh ji, for gracing this occasion. First of all the participants who have joined the session and those who would be watching this session on YouTube,
This session is taking place on the auspicious occasion of Mahashivratri. And it needs to be said that when we talk about intelligence, okay, pure intelligence, consciousness, there is no other powerful manifestation of this consciousness as compared to Lord Shiva. So number one, I'm very, very excited that today we are hosting this session, and I wish all the participants and everyone happy Mahashivratri. It is said that this night can perhaps open up, okay, those layers of intelligence which might be a little bit dormant, okay, if you really have the eagerness to. Let's hope it happens with me. It happens with everyone. Okay, happy Mahashivratri to all of you. Now, when we speak about artificial intelligence, I think this wave has caught on accelerated pace for the last 1.5 years. Of course, it started with Chat GPT at the retail level, but in financial markets, especially for the last 1.5 years, the way in which artificial intelligence has brought about a productivity boom and investment boom is unparalleled. I hope you are catching both the words. I said productivity boom and I said investment boom. Now, the typical Indian psyche is that इंडिया तो उस तरह का इन्वेस्टमेंट कर रहा नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जैसा यूएस कर रहा है जैसा चाइना कर रहा है एंड वी हैव मिस्ड द बस बट द पॉइंट इज दैट द मेन प्रूफ of artificial intelligence lies in the usage of it, the applications of it. And I think India knows its relative situation quite well. We are not a capital rich country. We have always been a capital starved economy, but an economy where the human capital, okay, as in the labor and the quality of labor and the passion with which everybody is bent upon to make their life, okay, super duper perfect. That is the human endeavor which enables us to be open towards any technology and to adopt it. I feel we, the financial community, are the ones who are going to experience and who are experiencing the greatest acceleration of applications in artificial intelligence. We have been exposed to a lot of artificial intelligence webinars and seminars and summit, okay, that are happening place. But I'm telling you that this one is special because this is appealing to those audiences who are in the field of finance, who are doing research on companies day in and day out, and they are doing it in a certain manner which is not as per current practices. So the way in which Saurabh Kumar sir will be dealing with these issues, you will be enlightened, believe me. All my students especially, I don't know how many are my students, but we do talk about artificial intelligence in the CFA curriculum. We have a lot of stuff of big data, machine learning, okay. But the way practically it is to be integrated and how is it happening, I think Saurabh ji will provide a tremendous exposition of it. Okay, I would have to acknowledge that my experience or my expertise in AI is very, very limited. Even I am looking forward to his sessions in Analyst Tech. Okay, believe me, the one sessions which I'm looking forward is Saurabh ji's session. And even though I may not get opportunity to attend it live, but as soon as the session happens, I'm going to really latch upon to it because you know I am so hungry in terms of knowing more and more. Okay, so over to you, Saurabh ji. In fact, I am going to listen to your session with full attention and with full energy. Thank you. Thanks, Sanjay sir, and wish you a very happy Mahashivratri and happy Mahashivratri to all. And actually, Sanjay sir, we all are learning. This field is evolving every single day and something which is very new. So we all are learning, and I am also learning while teaching. In fact, let me tell you, 4 months back when I did my first workshop, and by the time I finished my fifth workshop, in 3 months, the content changed by almost 20%. And when we'll be teaching here again, it will go through another 15-20% change. So it's a world where we all learn together and we all share. That is how we are going to do. And I'm also very much excited. And let me thank you for giving this opportunity. It's a great opportunity, and it is always good to interact with like-minded people from equity industry, people who are passionate about the world of finance. And we all learn and grow together. So all excited.
Yeah, one thing I was saying that अपने को हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज करना है. मैं भी भूल गया था, पता नहीं इन द क्या होता है इन ऑल द फॉर्मल प्रेजेंटेशन. तो आवर स्टूडेंट्स रियली लाइक द हिंदी टच इन बिटवीन. तो हम लोग डेफिनेटली बीच में हिंदी यूज करेंगे. एंड ऑल द स्टूडेंट्स, अभी सौरभ जी जो इंडिकेट कर रहे थे, वो उन्होंने एक ड्रिफ्ट प्रोवाइड किया अबाउट व्हाट हैपेंड व्हेन क्लॉड हैज कम आउट विद द क्लॉड कोवर्क एंड द क्लॉड कोड. उनके बारे में बोला था, which has really मैंने blown away all the IT stocks and all that. So we will have a lot of exposition उसके बारे में in today's session. Yes, Saurabh, all over to you. Sure. Sir, how should we conduct it? Should we go through like how the fintech and the AI has evolved, and then we'll look through certain case studies? Because I'm sure students, there'll be a lot of curiosity about कि AI में सीखना क्या है. So do we follow a little bit of theory and then hands-on kind of structure? थोड़ा सा केस स्टडी का टेस्ट दे दीजिए पहले, ठीक है ना? बिकॉज स्टूडेंट्स को है. एप्लीकेशन बहुत पसंद है कि केस स्टडी क्या चीज में कराने वाले हैं, बिकॉज आई नो दैट इज व्हाट विल हिट द ऑडियंस. एंड उसके बाद यू कैन बैक ट्रैक इनटू हाउ एआई हैज इवॉल्व्ड. ठीक है, उसके अलावा आई एम श्योर शुभकांत वुड बी लुकिंग एट द Q&A टैब, और जो भी Q&A आते रहेंगे पूरे सेशन में, शुभकांत जी उसको कंपाइल करके लास्ट में अपने से वो पूछेंगे. ठीक है, सो दैट्स हाउ वी गो. मेनली आप जो है ना आप मेन बैट्समैन है जो स्कोर कर रहे हैं. ठीक है, हम लोग क्रीज पे खड़े हैं आपके साथ, जस्ट बिकॉज आउट नहीं हो. ठीक है, दैट वे. Sure. So usually मैं पढ़ाता हूँ investors को. So in my education program, I have all the people who are invested in the market, and that is how they subscribe. तो वहाँ सबसे पहले शुरू होता है कि स्टॉक आइडिया बताओ. So I am sure even students will be excited कि स्टॉक आइडिया से, because if you see the analytical process of a research analyst, equity research analyst, it starts with idea generation. आइडिया नहीं है तो फिर आप क्या रिसर्च करोगे? तो we will see a case study की अभी और लास्ट 5 years में तो पहले 2000 कंपनी हुआ करती थी, अभी SME आ गया है, यू हैव 4000+ कंपनीज. सो कहाँ पे फोकस करना है? बिकॉज एक बार में यू कैन नॉट स्टडी ऑल 4000 कंपनीज. सो सबसे पहला तो ये होता है कि फोकस कहाँ करना है, एंड हाउ डू यू आइडेंटिफाई आइडियाज यूजिंग AI. एंड आई थिंक सर टोल्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इट इज गोइंग टू इम्प्रूव द रिसर्च प्रोडक्टिविटी. सो प्रोडक्टिविटी कैसे इनहेंस होता है आइडिया जनरेशन में? तो एक केस स्टडी हम देखेंगे आइडिया जनरेशन का. एक बार आइडिया जनरेट हो गया, देन if you are researching on idea, it's a time taking exercise. Like if you take IT industry, you will have employee based data. If you take a mining industry, you will have a production based data. और फिनेंस का डेटा सबको इजी मिल जाता है, वो तो 2 मिनट का काम होता है. जो ऑपरेशनल डेटा होता है वो इजीली नहीं मिलता. And when you blend finance with operations, then the beauty of unit economics, business model, mode, pricing power, all that comes. But वो data extraction में ही 5 दिन लगता है. How do you do in from 5 days to 5 minutes? We'll see a case study on that. Third case study we'll see कि ठीक है, रिसर्च हो गया, आइडिया आ गया, अभी इसको ट्रैक कैसे करें? So if you have to track some 20 sectors, you have to track some 50 portfolio companies. So पहले लगता था कि it's a humongous exercise. You need 54 employee force and all. Now these things have become very easy to manage, and it has become very productive. You don't need 50 people. It can be done with 5 people also. So we'll see कि how to track some of the sectors. And फिर उसके बाद for any equity research analyst, presentation, reporting, this is part of your day-to-day job. You have to make PPTs and all. 6 months back, these things were not possible. मुझे याद है कि 6-7 महीने पहले की जो प्रेजेंटेशन क्वालिटीज थी उतनी अच्छी नहीं थी, बट दैट हैज आल्सो गॉन थ्रू अ मैसिव चेंज. इनफैक्ट फर्स्ट टाइम इन माय 20 years of career, I have stopped making PPTs myself. I am taking the help of AI also to make PPTs because I am happy with the kind of quality I am getting. So these are the 3-4 case studies, right from idea generation till tracking, monitoring, research, tracking. We will cover all of that quickly in 5 minutes. परफेक्ट. सो स्टूडेंट्स जैसे अपने क्लास में डिवाइड करते हैं ना चैप्टर को 3 पार्ट्स 4 पार्ट्स में. सो लेट मी टेल यू,
First of all, Saurabh ji will take us through the evolution of AI, जो कि बहुत important है, because if we don't understand the evolution, we don't know where are we standing and what more to go. And secondly, उसके बाद he is going to show the case studies जिसमें idea generation and how do you do 5 दिन का work 5 मिनट में, ठीक है, and how do you do sector research and all that stuff होने वाला है. कहीं पे भी हमने कुछ by chance idea actually दे दिया तो we are clearly saying that this is only for education purpose, ठीक है ना, and this is not a recommendation to buy that stock at all. ठीक है, okay, let's start, Saurabh ji. Sure. And thanks for highlighting because I am a SEBI registered investment advisor, तो हमें तो उससे ही शुरू करना पड़ता है. So, okay. So we'll start, and why giving a framework in the beginning is important because I am sure कि students will have a lot of questions in mind. सबसे पहले तो AI है क्या? और सर जैसा आपने बोला कि लास्ट 2-3 साल में सब ऑल ऑफ सडन इतना पिक किया है. देयर इज अ रीजन कि ये लास्ट 3 साल में ही पिक क्यों किया है, ये 10 साल पहले पिक क्यों नहीं किया. एंड वंस यू अंडरस्टैंड दैट बैकग्राउंड ना, देन when to use it, when not to use is how much to depend, all of that will become easy. एंड दो काम 5 मिनट में होगा, बट वो जो एनालिसिस का ह्यूमन प्रोसेस है वो चलता रहेगा. आपको डॉक्यूमेंट दे देगा 50 पेज का, अब पढ़ना और एनालाइज करना हमारा काम है. सो स्टिल आई मीन द ब्यूटी इज इट्स नॉट गोइंग टू रिप्लेस अस, इट्स जस्ट दैट इट इज गोइंग टू मेक अस मोर प्रोडक्टिव. सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन. विल गो थ्रू 5-10 minutes of little bit of theory where I'll set the context and then we'll go through the case studies. As I said कि हम 3-4 केस स्टडीज करेंगे. एंड आप देख सकते हो कि बेसिकली जो एनालिस्ट का जो वर्कफ्लो होता है, आइडिया जनरेशन, आइडिया रिसर्च, बाई साइड, ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग, सेलिंग, ऑल ऑफ दैट AI plays a role. And what I have seen interacting with people, बहुत बार लोगों को लगता है ना कि बस AI ये बता दे कि ये बुल स्टोरी है या बेयर स्टोरी है, बाई करना है या सेल करना है. The purpose of AI is much beyond that. The purpose of AI is to augment and expand our knowledge base. There are sometimes things we like. फार्मा ऐसी इंडस्ट्री है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है, ऐसे ऐसे टर्म्स होते हैं, अगर उसको समझना है तो इट हेल्प्स टू इम्प्रूव टाइम एंड एफिशिएंसी. सो मैंने बोला ना कि वो जो ऑपरेशनल डेटा होता है, कितनी गाड़ियां बिकी, कितना सीमेंट बिका, अगर आपको किसी का प्राइसिंग पावर निकालना है तो आपको देखना होगा कि रेवेन्यू पर यूनिट कार इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, रेवेन्यू पर मीट्रिक टन सीमेंट इंक्रीज हो रहा है कि नहीं. वो सब करने के लिए जो डेटा कलेक्शन होता है, उसका जो टाइम एंड एफिशिएंसी गेन होता है, तो यही सब केस स्टडीज हम देखेंगे. बट दीज आर द थिंग्स विच यू कैन डू विथ AI. नाउ व्हाई AI इज पिकिंग अप राइट नाउ, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट. देयर आर 2 चार्ट्स साइड बाय साइड. लेफ्ट साइड आप देखोगे, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ पब्लिश्ड पेपर्स बाय AI टेक्निक्स ओवर टाइम. उसमें जो सबसे एडवांस लेवल की टेक्निक है, स्पेशली अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द AI क्या है, ये लैंग्वेज मॉडल्स हैं. एंड आपने सुना होगा टर्म LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स. इट्स अ ह्यूमन इंटरेक्शन, द वे वी ह्यूमंस इंटरेक्ट. सो it started all with natural language processing, then natural language processing started using neural networks, then deep learnings. These are all computational algorithms. So AI, the foundation of AI has been built over these kind of algorithm evolution. And when you especially look at ये जो green वाला bar है, this is about all the papers on the neural network and deep learning. And look at the kind of explosion which has happened in last 7-8 years. At the same time, look at the explosion which has happened in how the Google search word for fintech has come. How all of this has happened, इसकी भी एक हिस्ट्री है. See, अगर आप टेक्नोलॉजी देखोगे ना 90 से, सो सबसे पहले आपके डेटाबेसेस आए. फिर अगर आप देखोगे सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे पहले ERPs आए. ERP का पर्पस क्या था? डेटा कैप्चर करना था. बट ERP स्ट्रक्चर डेटा कैप्चर करता था. टेबल में डेटा होता है, कस्टमर का डेटा हो गया, प्रोडक्ट का डेटा हो गया. जब धीरे धीरे इंटरनेट इवॉल्व हुआ तो लोग कस्टमर फीडबैक लिखने लगे. फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि एनुअल रिपोर्ट्स भी टेक्स्ट फाइल में आने लगे, PDF में आने लगे. सो फर्स्ट वी इवॉल्व इन बिल्डिंग सिस्टम्स, देन डेटा कलेक्शन, देन फर्स्ट स्ट्रक्चर्ड डेटा कलेक्शन, देन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कलेक्शन. जैसे आप जोमेटो पे जाते हो तो होटल के रिव्यूज होते हैं. तो ये जो पूरा इवोल्यूशन था डेटा का, बिकॉज एल्गोरिथम्स जो है वो डेटा पे काम करते हैं, और AI स्पेशली जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा इस सब पे भी ज्यादा काम करते हैं. उसका जो डेटा कलेक्शन था, आपको पहले इनफ डेटा चाहिए कि मॉडल्स ट्रेन हो सके. दूसरा, आपके एल्गोरिथम्स की एक्यूरेसी कितनी है. और तीसरा, आपके मशीन्स का कंप्यूटेशन पावर कितना है उन कैलकुलेशंस को करने के लिए. तो इट्स अ ट्रायंगुलेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स. अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा, एक्यूरेसी ऑफ द एल्गोरिथम्स, सस्ते में मशीन का कंप्यूटेशन पावर मिलना,
एंड ऑफ कोर्स द फाइनेंस इंडस्ट्री वाज आल्सो ग्रोइंग विद द डेटा, विद द अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा. अगर मैं वो अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा दिखाऊं, मैं जब भी जैसे मोतीलाल ओसवाल सर का, रामदेव अग्रवाल सर का, इन लोगों का इंटरव्यू देखता हूं, या फिर बड़े बड़े इन्वेस्टर जो 30 साल पहले से हैं, तो कहीं ना कहीं जब 90s की बात होती है ना, तो हमेशा ये कहते हैं कि उस समय और कुछ होता नहीं था, एक एनुअल रिपोर्ट आता था 40 पेज का, बस वही पढ़ते थे. फ्रॉम देयर टू टुडे वेयर एवरीडे फाइलिंग इज हैपनिंग, हर दिन एक टिकर का डेटा आ रहा है, मिनट लेवल पे ट्रेडिंग होती है. तो इमेजिन द क्वांटम ऑफ डेटा विच इज बीइंग जनरेटेड बोथ इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड इन टर्म्स ऑफ डेटा टाइप. मैं इसी चीज को हाईलाइट कर रहा हूं कि फाइनेंस में क्या हुआ है. आपका डेटा एनुअल से मिनट लेवल पे चला गया है, आपका डेटा स्ट्रक्चर्ड से नॉन स्ट्रक्चर्ड लेवल पे चला गया है, जहां आपके कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट हैं, आपके एनुअल रिपोर्ट्स हैं, कंपनी फाइलिंग है, क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट है. So this data has become conducive. On the other side, the technology of large language models, language analysis has also become conducive because of multiple things. And मैंने उसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये की थी कि लैंग्वेज एल्गोरिथम्स की एक्यूरेसी. सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है. अगर आप इस चार्ट को देखोगे ना, तो ये क्या कहता है कि ह्यूमंस जो काम करते हैं, जैसे हैंड राइटिंग को रिकॉग्नाइज करना, स्पीच को रिकॉग्नाइज करना, रिकॉग्नाइजिंग एनी इमेज, recognizing language understanding, comprehension understanding, these are the way a human mind thinks. So scientists, researchers, they have been working on algorithms to make it as accurate and as good as how a human mind interprets it. This is a chart which says in last 20 years how this accuracy has improved. And if you see after 2015, most of these skills have been able to be achieved through computational power. Before 2015, the accuracy of all these jobs were not as accurate. So जब आप देखोगे ये सब चीजें कैसे ट्रायंगुलेट हो रही हैं, that is why you see there is a, after 2015 there is a huge jump in the word fintech, huge jump in deep learning, and then all of these things are slowly converging into AI. So I hope it helps you to get the context कि हम आज अगर इस एरा में हैं तो क्यों है और उसके पीछे की क्या हिस्ट्री है. Are we good, sir? I mean, I don't want to bore with a lot of theory, but I thought this theory is very, very interesting to understand where we are, why we are. So shall we proceed, sir? यस सर, कॉन्टेक्स्ट तो देना ही पड़ेगा. ठीक है. एंड टू टेल यू, बोथ सीएफए में और एफआरएम में, दोनों ही प्रोग्राम्स में आपने जो भी बता रहे थे ना, वो पूरा का पूरा एक्सक्रूशिएटिंग डिटेल्स में, स्पेशली एफआरएम में. ओके, ऑल द सपोर्ट वेक्टर मशीन्स दैट यू आर शोइंग, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क्स, डीप लर्निंग, दैट्स टोटली इनग्रेन्ड इनटू द एफआरएम करिकुलम. बट वही बात है कि ये सबको इक्विटी मार्केट्स में जो है कैसे लगाएंगे, कैसे यूज करेंगे, ठीक है, दैट इज व्हाट एक्साइट्स द स्टूडेंट्स ट्रेमेंडसली. सो वी विल स्मूथली सेल ओवर टू द एप्लीकेशन पार्ट. Great, sir. So before we jump to cases, एक और चीज मैं बताऊंगा, because we all talk about AI and people are new to this. So एक दिमाग में ये रहता है कि AI है क्या, and AI का मतलब है कि बैठ के कुछ कोडिंग करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा. And I don't know how many students have heard this word called prompt engineering. So AI का जो स्किल होने वाला है ना, और ये जो दुनिया होने वाली है, so basically it is my personal belief, we are entering into era from human to human communication to human to machine communication. And अगर बच्चा 4 साल का होता है और जब वो स्कूल जाता है तो मैथ साइंस सीखता है, लेकिन उससे पहले उसको हिंदी सिखाया जाता है, इंग्लिश सिखाया जाता है, तमिल सिखाया जाता है, जो उसका लैंग्वेज है. वाई? बिकॉज the language understanding is very, very important to communicate. You could be a master of maths and science, but if you are not able to communicate, that knowledge remains in mind. So communication skills are very important. But हमारा, इनफैक्ट आज सुबह मैंने ट्वीट किया है कि हमारा आज तक का जो स्कूल का सिस्टम्स था, वो लैंग्वेज का, कम्युनिकेशन का, वो ह्यूमन टू ह्यूमन था. एंड द वे द वर्ल्ड इज गोइंग, वी आर एंटरिंग इनटू एरा वेयर एवरीबडी हैज टू अंडरस्टैंड how a human to machine communication happens. And what we are going to learn in this curriculum is based on the foundational skill of how to do a human to machine curriculum, how to do a human to machine communication. So आपको बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं होगी. You would have heard about Python, Java and all. The beauty of AI is कि पहले अगर humans को machine से communicate करना था,
तो आपको पाइथन आना चाहिए था, आपको सी प्लस प्लस कोई तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए था. What AI has done is it has democratized that communication. So prompt engineering is the way of democratizing that communication. And whether you are a financial analyst or whether anybody, I believe we are going to live in a world where everybody should know prompt engineering. So मैं आपको बहुत सारे केस स्टडीज दिखा रहा हूं. ये केस स्टडी का जो फाउंडेशनल स्किल है ना, वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है. वी विल लर्न इन दैट कोर्स. बट आज के दिन में हम वो जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे करते हैं वो स्किप करेंगे. We will assume that we have created something through prompt engineering and then we will go and we will see how it can be worked. Okay. So आगे बढ़ते हैं सर. यस सर, आपको पता है जैसे मैं अभी जापान गया था, ठीक है, तो पहले से ही एप्स डेवलप्ड है जिसमें कि अपने को लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जापान में. वॉट एवर वी आर स्पीकिंग इन आवर लैंग्वेज दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू द जापानीज लैंग्वेज एंड वी आर डीलिंग विद देम. तो आई थिंक ये जो अगर कोई समझे, तो आपने जो बोला अभी वो ये बोला कि पहले हमें मशीन की लैंग्वेज में या सोचिए जापानीज लैंग्वेज में जापान में बात करनी पड़ती थी, और अब क्या है, हम अपने लैंग्वेज में बात कर रहे हैं और वो अपने आप ही लैंग्वेज कन्वर्ट हो जा रही है इनटू मशीन लैंग्वेज. अंदर ही अंदर द मशीन इज गेटिंग द अंडरस्टैंडिंग एंड देन इट इज रिस्पॉन्डिंग इन आवर लैंग्वेज. तो इट्स ऑल सूटेड टू अस कि भाई आपके लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं और मशीन से आप समझ भी सकते हैं. वेरी गुड. Perfect, sir. Yes, sir. Yes. So we'll proceed. So we talked about we are going to see these 3-4 case studies. तो अभी स्टूडेंट्स के दिमाग में एक और क्वेश्चन ये होगा कि कौन से टूल पे सिखाने वाले हैं. और ये अनदर इट इज मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन कि आपका फेवरेट टूल कौन है. देन वी ऑलवेज थिंक ये टूल अच्छा है, वो टूल खराब है. सो अगेन आई हैव गिवन यू मल्टीपल टूल्स, बट टूल्स के साथ मैंने रोज में कुछ और भी ऐड किया है. What you see here, these are different types of use cases which a financial analyst uses in his day-to-day life. These use cases have been dissected based on document type, based on research workflow, based on research process, based on research constraints. Like sometimes you will have a set of input documents to research, but there could be times when you don't require any input document. जैसे अगर आपको एनुअल रिपोर्ट एनालिसिस करना है तो एनुअल रिपोर्ट चाहिए, बट अगर आपको सेक्टर के बारे में समझना है तो यू डोंट नीड टू हैव इनपुट डॉक्यूमेंट, यू कैन गो एंड रीड ऑन इंटरनेट. सो विच टूल इज गुड और बैड, दैट इज नॉट द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज विच टूल इज बेस्ट सूटेड फॉर विच काइंड ऑफ यूज केस. सो मैं आपको आज ये जो 3-4 केस स्टडी बताने वाला हूं, आई विल पिक 2 टूल्स, नोटबुक LM एंड. डजंट मीन कि बस यही 2 टूल हैं या फिर ये टूल बेस्ट है या फिर ये टूल खराब है. द लर्निंग इज वी आर पिकिंग द राइट टूल फॉर द राइट यूज केस. एंड इन दिस कोर्स वन ऑफ द थिंग्स विच विल लर्न इज हाउ टू पिक द राइट टूल फॉर द राइट यूज केस. So with that, I will pick some of these things, like I told, idea generation, stock research, reporting. So some of these things we will learn from here. So इफ यू सी, रोल के बारे में हम समझ गए. पहले ये सब ह्यूमन था, ह्यूमन से गया एआई, और भी एक और वर्ड जो आ रहा है जो हम क्लाउड की बात कर रहे हैं, एजेंटिक एआई. कि अभी तो आप एआई में कर रहे हैं तो आप एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर रहे हैं कि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं. व्हाट इफ आप उसको बोल दो और वो करता रहे और आपको रिपोर्ट बना के दे दे. सो द रोल ऑफ एआई इज ऑल्सो चेंजिंग. एंड कवरेज वी टोल्ड कि हम थोड़ा कंपनी के बारे में देखेंगे. वी विल सी अबाउट सम सेक्टर्स इन दीज यूज केसेस. And I have told you about prompt engineering also कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है. Now you know what is prompt engineering. और prompt engineering के थ्रू अगर वो काम आप let's say 10 स्टेप में कर रहे हो और रोज कर रहे हो, if you are able to guide it कि आपको रोज नहीं करना पड़े, आपने एक बार गाइड कर लिया और फिर सिस्टम मशीन उसको रोज आपके लिए कर रहा है, that is workflow automation. So we will see through these case studies. So theory is done. Here is the interesting part. So I will pick one tool called Notebook LM. And we will start with idea research. So सबसे पहले idea research में क्या होता है कि there are multiple ways. One way is to track company financial result, look for companies which are doing well. Another way is look through conference calls because वहां पे पूरे numbers discuss होते हैं, management gives their guidance, हम इतने % से grow करने वाले हैं. या फिर अगर किसी को contra investing करनी है तो he goes and look कि कहाँ पे सबसे ज्यादा पेन है, कहाँ कंपनी को बहुत नसीहत मिल रही है इन्वेस्टर्स से. So he will look for pessimism. So pessimism is a theme. Optimism is a theme. These are different kind of research philosophies.
बट हाउ डू यू नो कि कहाँ 2000 कंपनीज में पेसिमिज्म है, कहाँ 2000 कंपनीज में ऑप्टिमिज्म है, कहाँ 2000 कंपनीज में मैनेजमेंट इज टॉकिंग अबाउट being in the best of themes, like today AI is a theme, semiconductor is a theme. ये बातें कहाँ हो रही हैं? Humanly for a person it is impossible. इंडिया में आज के डेट में almost every quarter 800 conference calls happen. It's humanly impossible to go through 800 con calls manually within a 10-day period. So this is where the AI uses. So now from PPT mode, I will jump to execution mode. Again, we will learn all these things. कैसे इस पे जाना है? This is the interface of Notebook LM. Usually any AI interface, it will have a way to import data so that it can work on the data. It will have a mode of interaction where you can chat with the machine. This is what I call it's a human to machine conversation, communication. And depending on, so if you see there is a language I'm talking, there is a structure to it. I'm talking AI to think as an expert equity research analyst. Why I have used this word, there is a reason. These are the things which we are going to learn in prompt engineering. Why I am writing these things, why I'm giving a structure, why I'm giving a page, why I'm giving constraints. These are the ways and means to talk with the machines. And once we give the right set of instruction, so अगर आप डेटा साइंस मशीन लर्निंग से मैं आता हूँ, डेटा साइंस में एक बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट था, गार्बेज इन गार्बेज आउट। क्योंकि एल्गोरिथम्स काम करते हैं डेटा पे, अगर डेटा ही खराब है तो एल्गोरिथम्स की आउटपुट भी खराब होगा। तो वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में भी है। अगर आप इसको बस बोलो कि इन्फोसिस का परफॉर्मेंस बताओ, अब उसको पता ही नहीं है कि आपको एनुअल परफॉर्मेंस चाहिए, क्वार्टरली परफॉर्मेंस चाहिए, निफ्टी 500 से रिलेटिव परफॉर्मेंस चाहिए, आईटी सेक्टर से बेंचमार्क चाहिए, परफॉर्मेंस उसको पीयर से कंपेयर करना है, परफॉर्मेंस आपको सेल्स ग्रोथ पे चाहिए, पैट ग्रोथ पे चाहिए। तो ये बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है। So if you are more structured, more specific, more context, then it will give a better response. So सबसे पहले अगर आइडिया जनरेशन करना है तो आप देख सकते हो ये सब जो डॉक्यूमेंट्स है ना, ये सब कॉन्फ्रेंस कॉल्स हैं, 20-25 पेज डॉक्यूमेंट फॉर ईच कंपनी। अब अगर मुझे यह जानना है कि इसमें से कौन सी कंपनीज हैं जो 20% से ज्यादा ग्रोथ करने का बात कर रही हैं, ऑफकोर्स बात करने का मतलब ये नहीं है कि वो कर ही देंगी, बट एटलीस्ट अगर आपको एक कंपनी आइडेंटिफाई करनी है तो पहले सिग्नल तो मिलना चाहिए कि उसमें इंटेंट है, वो जज्बा है, वो मोटिवेशन है करने का। वो करेगा नहीं करेगा बात की बात है, वो भी आप ट्रैक कर सकते हो कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। अब मैनुअली मेरे लिए इफ आई टेक 300 डॉक्यूमेंट्स, 20 पेजेस, 6000 पेजेस डॉक्यूमेंट्स, आई कैन नॉट रीड। सो व्हाट आई विल डू हियर इज, एंड आई विल शो यू द लिस्ट, आई विल एग्जीक्यूट इट एंड शो यू अगेन। सो मैंने यहां पे बोला give me a list of companies, which are the companies talking about margin improvement and operating leverage. Above that, I will go for sales growth also. So yeah, so this is where I'm asking. So let me just type it here. Among all these companies, you have 281 resources. That means there are 281 company con calls. Which of them have projection for more than 20%? I have given multiple keywords. These are the parts of prompt engineering. See, a normal manufacturing company will have sales. A company in a mutual fund business will have an AUM. A company in an e-commerce business will have a gross merchandise value. This is where a domain knowledge will come. That it's not only sales. There could be multiple form of sales, or it could be order book indication also. So which is having more than 20% this. And then please provide, you are giving a structure, you are communicating in a very structured manner, you want the output also in a structured manner. Please provide the output in a table with company name, projected sales, and exact statement from the transcript. Why? It can give this company a 20%, company B 40%. How do you trust if it is done in the right way? So there has to be a data traceability. If the data cannot be traced, conviction will not come. So if along with that statement, there is a proof also that look here, it is happening, it is better. So that is why I'm looking for the third statement. Once we run it, then it will go and you can see it is doing its work. It is scanning text, all the files, then going through the pages. Then it will give you a list, it will give you a table. So rather than looking at 700, 800 companies, if you have an investment style where you are looking for high growth companies, now your list will be shortened to maybe 30, 40 companies. Maybe you will have another filter, you will apply then 20 companies. Then these 20 companies could be worth studying. We'll again look now how to attack each of these 20 companies. So it takes 3-4 minutes. Again, it can take from 1 minute to 1 hour also. There is something called deep research.
Like in the world of machine learning, there is something called deep learning. Here you have something called deep research. Like if you want to generate a very detailed report of 120, 130 pages to understand in detail, so it needs to work a lot. So usko time lagta hai. So that is why some of the reports will also take 1 hour, 2 hour, but this will not take more than 1 to 2 minutes. And I have already saved this. Yeah, see, it has started generating. I don't know how many of you actively track market, but Acuitas is a company, last 3-4 quarters, it is growing at 25%. This quarter, management has increased the guidance. I can tell you because I track this company. This quarter, the management has increased. You can see they are revising the guidance from 25% to 30%. How do you track the data? Click here. It will pick the exact con call. It will go to the section. So your whole idea generation to ensuring that the research is what it is giving is correct, the traceability of data, everything is mapped. Not all AI tools will have this benefit of data traceability. So that is why I told it's not like one tool is good, other tool is bad. You have to understand for your use case, for your needs, कौन सा tool उसको satisfy कर रहा है. Not every use case you look for a data traceability. So now हमारे पास idea आ गया. अब इस आइडिया पे रिसर्च करना है. लेट्स से यू वांट टू रिसर्च ऑन एक्विटास. सो जस्ट गो बैक हियर एंड अभी के लिए लेट्स से कि वो एक्विटास की जगह एपीएल अपोलो ट्यूब था वो कंपनी. आप सिर्फ एपीएल अपोलो ट्यूब को क्लिक करो. दैट मींस अभी ये बाकी डॉक्यूमेंट्स आपके रिसर्च से बाहर है. यू वांट टू फोकस ऑन दिस डॉक्यूमेंट. यू वांट टू क्विकली अंडरस्टैंड कि ये 30 पेजेस में क्या क्या बात हो रहा है. You go to report. You can write your own prompts also. You can use some of the GUI based prompts also. So briefing doc is a GUI based prompt which summarizes. वो खुद ही निकाल लेगा, उसको स्ट्रक्चर करेगा, सेगमेंट करेगा. अगर आपको एक प्रॉपर सेगमेंट चाहिए कि मेरे को कैपेक्स का डिटेल दो, मेरे को ग्रोथ का डिटेल दो, मेरे को कंपटीशन का डिटेल दो, you can always write your own prompts here. But if you want, you can just click also and it will create a briefing document. So आप देखोगे यहाँ पे आ रहा है generating report. There is a third very interesting things. We all learn through examples. We all learn through visuals. आप 50 रो का टेबल और 50 कॉलम का टेबल दे दो, लोगों को समझ में नहीं आता है. वही चीज आप पाई चार्ट में समझाओ, तुरंत समझ में आता है. बार चार्ट में समझाओ, तुरंत समझ में आता है. सो क्वेश्चन है, ये तो 30 पेज का पीडीएफ है, ये कैसे समझ में आएगा? यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कॉल माइंड मैप. सो आई विल जनरेट अ माइंड मैप. सो ये ब्रीफिंग डॉक रेडी हो गया. इफ यू गो थ्रू दिस ब्रीफिंग डॉक, ये पूरा 30 पेज का जो कॉन कॉल है उसका पूरा समरी दे दिया इन टर्म्स ऑफ क्वार्टरली परफॉर्मेंस क्या रहा था, स्ट्रैटेजिक क्या क्या बात हो रही है, कैपेसिटी एक्सपेंशन की क्या बात हो रही है, नंबर्स क्या डिस्कस हो रहे हैं, फाइनेंशियल एफिशिएंसी क्या है. सी द आइडिया इज नॉट टू, काम चोरी का आइडिया नहीं है. हाउ वी यूज इट इज कि कहां पे फोकस करना है, कहां पे फोकस नहीं करना है. ऑफ कोर्स पोर्टफोलियो में तो 20-30 कंपनी ही रहेंगी, उस पर डिटेल काम हो सकता है. लेकिन वो जो 4000 कंपनी से 30 कंपनी की जो जर्नी होती है, या फिर उस 30 कंपनी के बारे में कितना ज्यादा जान सकता हूं इसी लिमिटेड टाइम में, दैट इज वेयर द रोल ऑफ एआई इज. सो I will show you this mind map. This mind map is beautiful. Now visually you are seeing a text document in terms of financial performance. Just imagine when you are seeing one by one, your ability to retain the information, all of that improves. Then it's talking about capacity expansion. Then it's talking about volume guidance. So this is like first idea generation. From idea generation, you are shifting to research. But it also could be, the research could be very generic, spread through multiple documents, not only single document. So let me again show you. Let's say there are 300 con calls here, and let's say you have joined a firm as an auto analyst, you are equity research analyst, you manage the auto sector. Now you want to see कि ये 300 कॉन कॉल में से हो सकता है 15-20 कॉन कॉल्स ऑटो सेक्टर के हों. वो पहले कौन से कॉन कॉल्स हैं, क्या बात हो रही है. नॉट ऑल द कंपनीज माइट बी बुलिश. कोई कंपनी बुलिश होगी, कोई कंपनी बेरिश होगी, कहीं पे हेडविंड होगा, कहीं पे टेलविंड होगा. जैसे अगर ऑटो में भी आप देखोगे तो पिछले 3-4 महीने से डोमेस्टिक ऑटो के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं. बट यूरोप इज गोइंग थ्रू अ पावर क्राइसिस. यूरोप के ऑटो में हालत खराब है. आई मीन लॉट ऑफ, I can say because I track a lot of companies who have done acquisition where casting and forging companies in Europe are going bankrupt. So you can do this at all the documents and selective document level also. So I'll show you one prompt where if you have to track a sector, and I use it day in day out. मैंने पिछले इस महीने 2 newsletters release किए हैं. What if I tell you, if so far it took you 5 days to research one company,
that work can be shortened into a one-day research work. What if somebody asks you which is a better tool, whether you should use a notebook LM or Claude or OpenAI? What if I tell you the amount of time you spend going through investor presentations, con calls to extract data about companies, which takes you 2-3 days? That work can be shortened in a 20-minute, 30-minute effort. There are many such things where AI comes in the investing and provide huge efficiency and productivity gains. You want to understand how all of this works? We are conducting an online workshop through 5-6 dedicated sessions to walk through this whole paradigm of AI and how to use AI for your day-to-day investing research and decision making. Click the link, explore further, and register if you're interested. Usme one section I have given on sector where I have covered. Lot of text has been generated from this, but yes, I do go through it line by line. मैं ये समझता हूं कि उसमें इन्वेस्टर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, पढ़ता हूं, वैलिडेट करता हूं. सो लेट मी शो यू हाउ टू जनरेट सम ऑफ दोज थिंग्स. सो this is on non-ferrous metal. I will just convert it to for auto sector. So think yourself as an expert equity. So you are doing a context setting. You want AI to think like you. So you have to also give him a role. That what is the role you have to play. See, the same document a bank analyst can also read, a credit rating analyst can also read, but their mindset will be different. Credit rating वाले को ये देखना है कि कंपनी डूबेगी तो नहीं, लोन मिल जाएगा. इन्वेस्टर को ये देखना है कि पैसा बनेगा या नहीं. So the role you play, the mindset, how you research changes. The same data you look, but how you interpret will be different. So that is why all these things are very much needed. So instead of non-ferrous metal, I'll just change it to automotive. Sector, here is list of 2050 plus conference call, multiple companies. Can you create a automotive industry document extracting insights from relevant company documents for me, and you cover insights from conference call for automotive again. And what do I want to cover? I want to cover list of companies where con calls are happening, key insights discussed about the industry, key tailwinds discussed about the industry, key headwinds discussed about the industry to have an unbiased, balanced view, key strategic aspects being discussed, key numbers and data points being discussed. Also highlight list of companies which are having very optimistic con call in the industry and very pessimistic con call. Also, I know from my domain knowledge, it's an industry where there is a domestic business and there is export business. So I also want to create a side-by-side view of domestic versus export and growth and the other guidance because market is hungry for growth. And then I'm mentioning this report can be a 30-40 page report or 3,000 to 5,000 words, but I should get all the important things. So once I run this, so this is like a market tracking. You can do a company tracking by reading the con call summary. You can also do market tracking by reading all the company con calls in a particular industry and build a point of view on the industry and then identify in that industry from a top-down analysis which of the companies are interesting as of now and where there is optimism, pessimism and all the things. So just give it a minute and then again it will analyze and it will start doing its work. Now imagine अगर यही काम आप manually कर रहे हो तो ये सब करने में कितना टाइम लगेगा आपको. So मैं हमेशा अपने मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको बोलता हूँ you are living in a golden period. इंडिविजुअल जो रिटेल इन्वेस्टर है आज से 4 साल पहले हमारी कैपेबिलिटी नहीं थी कि हम ये सब करते हैं. हमें 50 लोगों का फील्ड फोर्स चाहिए था. आज के डेट में वी डोंट नीड ऑल ऑफ दिस. So tools are advantage for people who know how to make best use of the tools. That is the beauty about tools. So you can see it is giving list of companies, not only auto companies. Auto maybe who are the OEM companies, who are the ancillary companies, who are the engineering ER&D. It's a technology, auto technology, and then auto financiers. So see, auto maybe it has been able to break and you can look at the names, Mahindra & Mahindra Financial Services, Shriram Finance, Tata Technologies ER&D, Tata Alexis ER&D. Then the key insights, China +1, there is a EV winter in West May auto EV is not doing well. SDB, it is going through a headwind, but still it is critical. ER&D is critical, but the growth is getting challenging. The current auto boom is happening because of GST rationalization, especially in the CV space. If you go and read the Ashok Leyland का जो पूरा quarterly result आया है, they are talking about कि GST reduction से क्या boost मिला industry को.
And then it is talking about the tailwinds. What are the tailwinds? So premiumization is a trend tailwind. Infrastructure capex for the commercial vehicle is a tailwind. Emission norms Euro 7 is a tailwind. एंड देन हेडविंड्स. तो अभी तो ट्रम्प जी मान गए हैं, पता नहीं कितने दिन मानेंगे, बट ये जो कॉन्कॉल्स हुए थे उस समय ट्रम्प जी माने नहीं थे, तो ये उससे पहले ये हेडविंड में डिस्कस हो रहा है. दैट इज वाई. एंड यू वुड हैव सीन कि मेटल कंपनीज अच्छी कर रही हैं, तो कमोडिटी और कॉपर के प्राइसेस बढ़ गए, तो ऑटो कंपनीज में स्टील कॉपर ये सब यूज होता है, तो ये एक नया हेडविंड इमर्ज हो रहा है. सो सी लॉट ऑफ थिंग्स यू आर लर्निंग अबाउट द सेक्टर, अबाउट द कंपनीज, देयर मीट रेट, क्या डेटा आ रहा है, क्या प्रोजेक्शन आ रहा है, कौन ऑप्टिमिज्म की बात कर रहा है, कौन पेसिमिज्म की बात कर रहा है. सो टीवीएस, मेन एंड बेरिंग, दे आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक, बट लुक एट द ER&D कंपनीज, लुक एट द शेयर प्राइसेस, वो हवा में नहीं हो रहा है, देयर इज अ रीजन. सो ER&D के बजट्स अभी हिले हुए हैं, ईवी के बजट्स हिले हुए हैं. So you get all the information, domestic, export. Domestic is good, export is bad. That is where the market is in the auto. So you get all this information. So now I'll quickly take you to the last case study, which I told कि वो 5 दिन वाला काम 5 मिनट में. Let's look at that. And also through that, I want to introduce you to one more tool. We have been loving this tool. I mean, if there is one tool in India which has democratized investing for retail investors, it's screener.in. And brilliant set of people, Ayush and Pratyush, they have also embraced AI. So let's look at that, how they have embraced AI. So I'll go to screener.in. Anybody in finance will be aware of this website. So let us say there is a company called Godavari Power. Godavari Power आप देखोगे तो स्टील में है, और स्टील में क्या होता है कि आपका जो आयरन ओर एक्सट्रैक्ट होता है, आयरन ओर के एक्सट्रैक्शन से फिर प्रोसेसिंग होता है, फिर रॉ प्रोडक्ट बनता है, फिर बिलेट बनता है, फिर ओर बनता है, फिर उसका लॉन्ग प्रोडक्ट बनता है. तो आप स्टील में आयरन ओर से लेके आप 7-8 लेवल के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, और आप जैसे जैसे वैल्यू एड में जाते हैं वैसे वैसे आपका पर मीट्रिक टन का रियलाइजेशन बढ़ता है. तो ये कंपनी बहुत कुछ करती है. अब इसका अगर कैपेक्स आएगा तो कैपेक्स से वो ओर बना बेचेगा या बिलेट बेचेगा या पाइप बेचेगा, वो जानना बहुत जरूरी है. उसके लिए उसका ऑपरेशनल कैपेसिटी, उसका यूटिलाइजेशन, उसका कन्वर्शन, वो सब जानना बहुत जरूरी है. तो दैट इज व्हाट आई टोल्ड कि फाइनेंशियल डेटा तो इजीली मिल जाता है. लाइक अगर आप गोदावरी पावर पे जाओगे, आप एक्सपोर्ट टू एक्सेल करोगे, पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, हजारों मीट्रिक सब आपको मिल जाएंगे. दिस इज द इजी पार्ट. But now let us say you have to do a volume analysis, you have to do a EBITDA per ton analysis, you have to do EBITDA per sales per ton analysis, you have to do a conversion analysis of how much of ore can convert into how much of long product. All additional data, that is not possible. So पहले हम लोग ये सब काम कैसे करते थे? ये एनुअल रिपोर्ट खोलेंगे, पीपीटी खोलेंगे, कॉनकॉल खोलेंगे, खोजते रहेंगे. एक कंपनी जितना कॉम्प्लेक्स होता था उतना ज्यादा टाइम लगता था. नाउ सी हाउ दीज थिंग्स आर हैपनिंग. सो यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हो कि मैंने जीपीआई के बारे में कुछ कुछ चैट्स, एआई चैट्स कर रखे हैं. सो जैसे वहां नोटबुक एलएम में प्रॉम्प्ट था, यहाँ भी प्रॉम्प्ट है. यहाँ बात करो और यहाँ पे आपको रेस्पॉन्स मिलेगा. सो आप देखिए यहाँ पे भी मैं कह रहा हूँ, थिंक योरसेल्फ एज इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट. अब यहाँ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम आस्किंग फॉर अ फाइनेंशियल डेटा, बट ऑल्सो एंड सी दिस इज वेयर योर डोमेन नॉलेज कम्स. अगर ये माइनिंग एंड मेटल की कंपनी है तो ये लुक थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशनल डेटा. अगर ये हॉस्पिटल कंपनी है, अब हॉस्पिटल कंपनी में तो आप पर टन का कॉन्सेप्ट नहीं होता. हॉस्पिटल में कॉन्सेप्ट क्या होता है? कितने बेड्स हैं, एक बेड पे एक दिन में कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, पेशेंट का कितने दिन में डिस्चार्ज हो रहा है. देयर इज अ टर्म कॉल्ड एलॉस, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे. So you have to understand the industry, you have to build your sector expertise, then you know what kind of data to extract. Because we are talking about metals and mining, here we are talking about production volume, sales volume, order book, capacity utilization, and then some standard things like employee count. So I am asking him that give me this data for last 5 years in a tabular manner. And if for a certain year you are not able to find any data, you can leave it blank, but don't exclude it. Have everything. If the data is there, produce it. Else, leave it blank. Give everything in a tabular manner. Finance to again, this is the operational data you can see. So what is the iron ore mining capacity in metric ton? You can see last 5 year production data, capacity utilization data. Then beneficiation. Beneficiation is a process by which you convert a lower grade iron ore into higher grade iron ore. So how much of this capacity is going through beneficiation?
how much is getting converted into pellets, sponge iron, steel billets. This is the value add product I was talking about. Imagine if manually you start going and you go through the 5 years of annual report, con call transcript, investor presentation, and you manually collect. We used to do it, but this is how things are changing. So earlier, if we used to analyze, let's say, 3 companies in a month, now we are analyzing 6, 7, 8 companies in a month. Earlier, I didn't know what I didn't know, but now I can ask AI that this is my understanding about the company. Have I missed something? So, there was a time when I missed a company's standalone versus consolidated result quality. So, उस कंपनी में क्या हो रहा था कि कंसोलिडेटेड लेवल पे 90 करोड़ का 85 करोड़ का एबिटा था, स्टैंडअलोन पे 100 करोड़ का था. ऑन ए 100 करोड़ कंपनी इट्स अ 15 करोड़ लॉस विच इज गोइंग स्टैंडअलोन टू कंसोलिडेटेड. When I read the report, I realized, oh my God, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था. So many times we guide AI, but there are times when AI also guides us, something which a human mind misses. Because human mind is restricted in terms of multiple dimensional thinking. मैं आपको एक और लास्ट चीज बताऊंगा. जैसे आप ये कॉन कॉल पढ़ रहे हो, एक यूज होता है हमारी इंडस्ट्री में कि you have to understand the quality of management. How do you judge? Future nobody knows. You judge by execution. So you go and see कि वो 5 साल में क्या किया है. अब 5 साल का आप कॉन कॉल देखोगे तो 5 साल में 20 कॉन कॉल है. When you start reading the first con call, by the time you reach to 20th con call, आप भूल जाओगे वो पहले con call में क्या बोला. And intelligent management, they are intelligent at changing the goalpost. So human mind is great, but human mind has limitations of not able to think in multidimensional space, not able to retain a lot of things in one place at one point of time with exact numerical values. These are the places where machines help. So remember, AI is an enabler for enhancement, for quality improvement, productivity improvement. But if you are looking for exact give me bull, bear, buy, sell, I think there are better uses of AI in that. So I hope you got a gist of what is coming through this quick 20-minute, 4-5 use cases. Sanjay sir, we will stop and take questions. Yeah, I think I am done from my side. So I'll stop and we'll take questions. I think from the time you started the applications, okay, वहां से जो सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स है उनको जो किक मिला होगा ना, मतलब दैट इज ऑफ अ डिफरेंट काइंड. एंड ऑब्वियसली 20 मिनट्स में क्या ही तो हो पाएगा, ओके, when it is hardly called a trailer. But the mentality that is there in certain people of surface level studies, जैसे आपने फॉर एग्जांपल माइंड मैप दिखाया, बहुत कॉमन है, ज्यादातर लोगों को नोटबुक एलएम में आता है. बट सपोज किसी को नहीं आता है, वो तुरंत आज क्या होगा, नोटबुक एलएम में माइंड मैप हर चीज का बनाना चालू कर देगा, ठीक है. एंड उसके बाद उसको लिंक्डइन में यहाँ वहां पोस्ट करना चालू कर देगा. एंड अदर्स विल से थम्स अप. मैंने लाइफ इज नॉट restricted to learning a single thing and then what we say in our language chamkawifying that on social media and getting appraisal that way. It is about digging and digging inside the substance of it. So apart from everything that you have been saying, and वंडरफुल जो आपने ऑगमेंटिंग का बात किया कि एआई तो अपने प्रोडक्टिव कैपेसिटी को ऑगमेंट कर सकता है. व्हाट इज रिक्वायर्ड इज द मेंटालिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट इस वर्ल्ड में अगर आपको डिफरेंशियल एडवांटेज लेना है, विच इज द रोल ऑफ अ फंडामेंटल एनालिस्ट, तो यू हैव टू गो डीप. The good thing is that now going deep has become easier. So I'm hoping that all the students who were always saying that ये AI में होगा क्या नहीं होगा, वो 20 मिनट्स में उनको बहुत ही अच्छा हिंट मिला होगा, ठीक है, कि क्या होने वाला है. दे लुक टू द करिकुलम ऑफ एनालिस्ट ट्रैक एंड दे विल अंडरस्टैंड दैट ये तो कोई मतलब कुछ था ही नहीं. इट वाज नॉट इवन 0.5% ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू डू. सो आई थिंक थैंक्स अ लॉट फॉर द वंडरफुल प्रेजेंटेशन. And it was speaking about the knowledge that you have, the experience that you have, which was coming your way, and you were constraining yourself to not invest a lot of time, but at the same time give us a glimpse. Wonderful presentation. Thank you. Thanks. Yeah. Shubhkan ji, can you please Yes, sir. share the Yeah. doubts? Yeah. Sir, before we go into the doubts, I think a lot of doubts were on the curriculum कि कैसे करेंगे, this course. And then Saurabh ji nicely explained कि अपने क्या करने वाले, मतलब उन्होंने वो छोटा धमाका, मतलब बड़ा धमाका छोटे में दिया अभी फिलहाल. So, but I'll at least share. I just wanted to share this uh, analyst stack program appendix around regarding our module 3, which is AI in finance. And a lot of people have participants has this questions, attendees has this question कि क्या क्या cover होने वाला है. So
just wanted to go through these. First one is the foundation and prompting. I mean, a lot of people are asking questions on how will we do the prompting? Uska kya understanding hai? What will be will we have the prompts available with us? Just wanted to showcase our structure in module 3, which is AI in finance. जिसमें we have the fundamentals and architecture, AI in finance tools, जो अपने अलग अलग tools use करने वाले हैं, landscape, investment workflow, prompt engineering का जैसे अभी सौरभ जी ने बताया, and to ensure कि hallucination ना हो, so hallucination management as well, and that will be followed by use cases for specialized workflows. जिसमें we'll have idea generation, sector and industry deep dive, company deep dive, expectation and streak view को कैसे analyze करेंगे, AI for risk assessment and red flags, and the specific buy side का workflow कैसा होता है in investment banking and उसका alternative applications. So a lot of questions, like once Saurabh started on the prompt engineering part, a lot of questions were around these questions. So this is where the analyst tax becomes, the key tool. I would say this is also another tool कि आप जब you'll get into that side of the career key as you pass your CA, for let's say you are already into the uh, analyst side, or you are viewing कि आप आगे चल के यहाँ जाने वाले, तो how you'll be substantiating yourself कि आप बाकी लोगों से कैसे अलग हैं. So this is where this becomes the key tool for you. So I'll stop sharing and I'll start with the questions. Okay. I just wanted to add one thing that ये जो suppose कोई youngster है who is into the second semester or first semester or third semester, and that youngster is perhaps feeling or thinking that यार सौरभ जी ने जो स्टील इंडस्ट्री के बारे में बोला, इतने सारे लेयर्स होते हैं, मेरे को तो पता ही नहीं है, ठीक है, वगैरह वगैरह. क्वाइट ऑफन व्हाट हैपेंस इज दैट इन द इन्वेस्टिंग वर्ल्ड level playing field is not created, as in the beginners think that how will they catch up. But मेरे को लगता है ये AI के आने से, if the beginner is भूखा, if he is really मतलब क्या बोलते हैं, interested in knowing, the level playing field is created much faster. Okay, if that passion or fire is there in you, it doesn't matter you are in the first year, second year, or you may be an equity research analyst for the last 5 years doing it traditionally. AI in finance is going to be a thing which is going to upgrade your productivity to exponential levels. Yes, Shubhkan, go on, please. Yeah. So I mean, first set of questions is mostly around like how will they manage their professional, and questions about how can they pursue this course. So the question is more on key. There's a working professional. How will he or she be able to attend these sessions? And then there are questions as to people who are, in their college, probably thinking of doing CFA and analyst stack together. So should they choose one, or should they be choosing analyst stack post they got the job, or whether they should do just CFA or analyst stack, or how they should combine both of these together. And for people, students who are just 12th pass out, तो उन्हें क्या करना चाहिए? Should they go with CFA, analyst stack, or how they should think about their future? So Saurabh ji, I to always answer these questions, but क्या होता है कि if you answer, okay, your perspective, तो maybe कुछ अलग तरीके से निकले, okay, regarding what you would like to answer to a person who has these types of questions. Please, your view. So, sir, this is my personal view. I think the way the world is going, we had a very structured kind of learning कि पहले आप 10th करो, फिर 12th करो, फिर engineering करो, फिर MBA करो. I learned data science in a time when data science courses were not there at that scale in colleges. So I started in 2012 when this whole thing was picking up. And there's something which picked up was MOOC, Mass Open Online Learning. I think that has become mainstream. So I think it is more to do with your passion, what you want to do in life. If you're passionate about doing something, of course, a basic education is a need one has to do, but I don't think it has to be restricted by either age or your degree or this and that. Because if you have a passion and you are enjoying it, you are learning it, nothing should stop you from learning. Of course, if you need to finish your 12th or graduation or post-graduation, I think that's a separate thing. But yeah,
if we have a passion and there's a means, earlier it was not available, today it is available. So I can learn. I mean, if I'm passionate about music, I'll do my work and I will learn music. That is how I see learning nowadays, when the information, the learning is available in abundance. Yeah, I would like to add something. आज सुबह ही मतलब कितना कोइंसिडेंस होता है. एंड आई वोक अप एंड रिफ्लेक्शन करते हैं ना कभी कभी अपने अपने लाइफ का ट्रेजेक्टरी. एंड आई वाज जस्ट रिमेम्बरिंग व्हेन आई अपीयर्ड फॉर माय क्लास 12. उसके बाद मैंने, होता है ना कि विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी से बाहर आने के लिए व्हाट एवर इट टेक्स, वैसा वाला चीज था. बट I feel that I was so lucky that I somehow got to know about the CFA program. उस समय इंडियन CFA होता था, okay, way back in the 1990s lates. And I joined the CFA program, CA भी join किया था. And then I get to know that I am made for this field, the capital markets. मेरे को regulations पे नहीं जाना है. It may not be true for others, but I'm trying to say that द मोमेंट एक पर्सन को अपना इंटरेस्ट पता चलता है ना, और वो अगर उसको लैचअप ऑन नहीं करता है, इट इज अ मिस ऑफ द सेंचुरी. ओके, बिलीव मी. मतलब वो ठीक है, वी बिलीव इन द सिक्लिकल पैटर्न ऑफ लाइफ, फिर से पुनर्जन्म होगा, ठीक है, वो मानते हैं हम लोग. बट आप कैसे मिस कर जाओगे जर्नी अगर आपको लगता है सो एक्साइटमेंट इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इनटू बाय साइड, इनटू सेल साइड, इनटू ट्रेजरी, कंसल्टेंसी, मैकिन्सी, मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन. मतलब ये सारा चीज आपको एक्साइट करता है और आप अपने आप को रोक रहे हो. मतलब इट इज सच अ मिस दैट आई कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ मच. हैविंग सेड दैट, जैसे सौरभ जी, आर यू हैविंग किड्स? Yes, sir. या प्लीज शेयर. कितने बच्चे हैं, कितने उम्र के एक हैं? एक बेटी है, शी इज 7 years old. ओके, सो आई हैव टू किड्स. ना वो दोनों के दोनों किड्स फाइनेंस में इंटरेस्टेड नहीं है. ओके, द बिगर वन इज इंटरेस्टेड इन फिजिक्स एंड मैथ्स, सो शी इज डूइंग दैट. द यंगर वन सीम्स टू बी गोइंग इनटू आर्ट, ओके, एंड म्यूजिक. दैट्स फाइन. मैं बोलना चाह रहा हूं केवल इंटरेस्ट समझो और उस चीज को फिर पकड़ो ना. अब ये थोड़ी देखेंगे आर्ट में क्या स्कोप है क्या नहीं है. तो वैसे ही मेरा बोलने का मतलब है, पता नहीं, मेरे स्टैंडर्ड फिलोसफी जो हो गई है ना, पीपल टेक सच अ पेन. माने when I meet my old students who have done chartered accountancy 10 years back, 15 years back, and they're right now in their mid 30s, ठीक है, they are sad that यार हम लोग इसके लिए थोड़ी किए थे. माने we wanted to get into the capital market and then they feel that यार अभी जाए क्या, पता नहीं क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं होगा. इट इज अ लेसन फॉर एवरीथिंग. पहला बात तो है, इन्वेस्टिंग में कभी भी जा सकते हैं आप. इट इज अ लाइफ स्किल जो आपके काम आएगा ही, चाहे कुछ भी कीजिए. यू कैन ओपन योर ओन investment advisory, you can start a PMS, you can manage your own funds. Okay, you can switch the job. नंबर 2, जो यंगस्टर्स हैं जो क्लास 12 के बाद है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं, वो यंगस्टर्स को केवल दो चीज समझना है. इफ यू आस्क मी कि सर आप बताइए सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है कि स्किल इंपॉर्टेंट है, इफ यू आस्क मी कि दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, विच आई डोंट बिलीव, फिर भी आई वुड से स्किल इज मोर इंपॉर्टेंट. क्लियर कट, स्किल इज मोर इंपॉर्टेंट. अगर एक बंदा इन्वेस्टिंग में लग गया है क्लास 12 के बाद, इन्वेस्टिंग में लग गया मतलब फोन लेके उस पर बाई सेल नहीं कर रहा है, अपने वो इन्वेस्टिंग नहीं बोल रहे हैं, पर अगर लग गया और वो उस पर नॉलेज गेन कर रहा है, वो फार फार सुपीरियर एज कंपेयर टू एक बंदा जो CFA किया है या FRM किया है. हाउएवर, अगर मैं एक पेरेंट हूं और मैं देख रहा हूं कि बच्चा मेरा क्लास 12 पास किया है, फाइनेंस में गया है, मैं डेफिनेटली विश करूंगा कि काश वो एक सॉलिड सर्टिफिकेशन जैसे CFA जैसा प्रोग्राम कर ले. ठीक है, बिकॉज उससे उसका एक्सेप्टेबिलिटी बहुत हो जाता है. प्लस अपने जब ये AI यूज कर रहे हैं ना, तो कई बार आपको एक थ्योरेटिकल ढांचा चाहिएगा, एकेडमिक ढांचा, ओके, फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट ऑल दिस इज अबाउट. आई थिंक वो एकेडमिक ढांचा इज प्रोवाइडेड बाय द CFA प्रोग्राम एंड द एक्सेप्टेबिलिटी एंड द स्किल वाला पार्ट, खासकर विद एनालिस्ट टैक, जो कि जिसका पैरेलल एक्चुअली नहीं है. पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. सम पीपल आर थिंकिंग दिस इज अ मी टू अफेयर. दोज हु नो मी वेरी क्लियरली, दे नो दैट वी डोंट ब्रिंग मी टू प्रोडक्ट्स इन द मार्केट. वी डोंट. हम लोग मी टू में बिलीव ही नहीं करते. या तो नहीं लाएंगे, पर लाएंगे तो ऐसा लाएंगे जिसका कोई मुकाबला नहीं है. ठीक है, सो आई थिंक जो सौरभ जी ने बोला, विच आई सेड, मोर और लेस कवर्स द एंटायर लेवल ऑफ क्वेश्चनिंग अबाउट यंगस्टर्स हु आर +2 क्वालिफाइड और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की, पहले CFA करे, एनालिस्ट टैग करे, क्या नहीं करे, मैनेज कैसे करेंगे. मैनेज का बात ही नहीं है. जैसे सौरभ जी ने बोला, इफ यू लव गिटार एंड यू स्टार्ट कि मैं गिटार सीखूंगा, क्या होता है कई बार अपने गिटार सीखते ही नहीं है, बिकॉज मेरा ये चल रहा है, मेरा वो चल रहा है. बट यू पिक इट अप एंड यू विल फाइंड समय निकल जाता है. और समय निकालने के लिए तो AI आया है. जो काम आप करते थे इतने टाइम पे, अब आप वो एफिशिएंटली कर सकते हो. द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ऑल्दो आई मेनी टाइम्स क्रिटिसाइज इलॉन मस्क और वेरियस ग्राउंड्स, बट आई एम वेरी मच
in agreement with him when he says that it will so happen that we people, we the human race, at least in the developed nations, will find that their quality of life will really improve. They will be able to do stuff like music, arts, and all that, which because of the pressure of livelihood and all that, we never do. So I think this is a totally reckless saying that दोनों कैसे मैनेज करेंगे. ठीक है, आप बहुत जगह समय वेस्ट कर रहे हो, इनएफिशिएंसी है, इसके कारण आपका दिन इतना होते हुए भी आपको लग रहा है कुछ मेरे पास टाइम मिलता नहीं. I think you require a lot of passion, focus, fire, and use of AI for the purpose of moving ahead. So that is our collective reply in this regard. Sir, there is something I would like to share from my personal career journey, and I think this question is relevant there. So I did my engineering 2005, worked in IT for 2 years, did my MBA, and then 4 years I worked in core finance. In fact, I was in infrastructure sector in financial due diligence and risk management. And Shadi hui, so I was in Mumbai, my wife was in Bangalore, and we decided to move to Bangalore because Mumbai cost of living, I felt it's, way too much. So यहाँ मेरे को सिर्फ एनालिटिक्स में जॉब मिला. और जब when I came in analytics, what we were doing analytics on Excel. And then it hit me that, is it really only analytics or is there more to it? So I didn't have an intent to shift job, but just to understand what kind of analytics happen in the industry, I started attending job interviews for Flipkart and all. And that told me that there is something called predictive analytics, machine learning all going on. And look, I didn't have a formal degree. So as I said, us time Coursera was just launched. In 1 year, I ended up doing some 8 courses on Coursera. And then I was working in HP at that time. And in HP services, there was a 200-member team was getting created specifically for advanced analytics, only machine learning work, which was the cream work at that time. And how I got entry, because I could show on my CV that, look, I have done these 8 courses on machine learning. If I would have waited that the company will do a formal course curriculum or I'll join a 2-year MBA program in analytics, it would have never happened. So, whatever you learn, it never goes waste. And if you have passion for something, you have to create your USP, what others are not doing and what is required. I can tell you, in last 2 months, I have taken one workshop for 100 plus people who are working in the industry. Why it was important for them? Because when they finished their academics, this thing was not there, but now it is needed. So the students who are today going, they might have these kind of skill sets, but those who have already gone, they don't have. And the industry is coming forward for them to tell that, look, now you need to learn. So just think from all those perspectives, rather than just about, a job and all. Even from a job, I highlighted why sometimes, being proactive and all of that helps. Just wanted to share my own journey because that is how I have shaped a career in data science. 100% sir, एकदम 100% it, and through our personal sharing only we are able to speak out our heart. Anybody holding back on taking the next step in learning, and plus those people who know me and who know our programs, they know that there could be X other programs teaching artificial intelligence and all that stuff, but over here they definitely get a positive NPV in everything that is delivered by us. So that's our reply to it, Shubkant. I think it was a very, 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 very comprehensive reply. You should take a carve out of it and release it separately. Yeah, for sure, sir. And as Saurabh also mentioned, the need of AI in the current time, I think it's really important that all of us understand the implication, the applications of this AI, and that is a big demand. कि जो भी analyst है, whoever is trying to get into the buy side or let's say even sell side, so the industry needs कि people should be aware about these AI tools and their applications. So very nicely picked that question. Okay, next question is on the tools, data, and AI usage in the program. Question basically आ रहे थे कि do we need to buy a premium of AI subscription to use the tools जो कि अपने program में cover करेंगे, and do we need to, I mean, I think Saurabh ji ने जो presentation दिया था, so the question was more on कि do we need to upload all annual reports manually from every company, and अपने कहाँ से लेते हैं ये data sets, so where do we get these data sets of all companies, and how can we access specific industry reports and conference call receipts, transcripts? So these are questions on related to the tools and data usage.
Sure, sir. What I will do is I will address most of the questions, and from an institute perspective, we have something in terms of tying up with some of these AI companies, or maybe you can provide. So, in terms of tool, at least from my side, for all these things, so you don't need to buy any paid version. And how it works is in most of them in the free version, you will be able to do a lot of things, but there will be constraint like you will not be able to post more than 10 queries in 1 hour, or you will have server level issues. So those kind of things will be there. But whatever we will learn, a free version will be more than enough. But nowadays you will see Airtel is having some tie-up, Jio is having some tie-up. So by paying 1 rupee, you can buy at least a basic pro or commercial version of those tools. So if you are getting access to something like that by paying 1 rupee, I think it's worth going, because then you will be able to do more. But to learn these things, you need to do is have a free account, and more than that is not needed. Coming to how all of this is done, data, how to import data and all of that. See, again, it depends on skill set. And see, whatever I am saying today, that may not be valid 2 months forward. Why? So right now, I'll tell you, a lot of this work 5 years, 1 year back, I used to do, and I used to write a Python code. Today, I don't write. So to collect the data, like there are two ways. You can go and you can manually collect the data, or you can buy your data. I mean, institutions also, academic institutes, they also have their own database. So that could be one source. But how I brought this data, again, I have written a Python code, but we are talking about Claude. You can go, and I'm working on, so as I said, this curriculum will keep on evolving. I can't guarantee, but I'm trying to see if there's a way to use Claude where nobody needs to write the Python code and all the con call transcripts are collected. I can't assure it will happen or not, but if it is possible, then everybody can get those codes. Else, what will happen? We will create a repository of con calls and we will share that repository with you so that you are able to do. But right now, as of now today, if you have to do that, either you need to collect it manually, or you need to write your own set of Python or any programming code to collect it, or you need to buy some kind of vendor data like AS equity data and all where it is available, and then you can collect it. Rest, sir, please, if you can address. Yeah, I think it was very, very transparently said. So professionals like Saurabh ji always are conservative in terms of what they can or they are going to deliver. So when he made that statement that I will try to the extent possible that whether Claude can be used for the purpose of generating that data without going through the Python code, okay? Because a lot of developments are taking place and he's again reiterating that अगर कोई बोलेगा ना सर हम लोग इस प्रोग्राम में जो अभी सीखेंगे एंड सपोज वी आर सेटिंग इन 2030 तो क्या 2030 तक भी सेम पेस से चलता रहेगा एआई? द आंसर इज नो। बट एक बात पक्का है कि आपने अभी जो सीख लिया उसके हेल्प से जो नए डेवलपमेंट्स आते रहेंगे वो आप इजिली पिकअप कर पाओगे बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन दैट मोड, ओके? एंड नंबर टू, as an educational organization, we would be always sharing the new developments from our side with you, okay? And he already answered that जो annual reports and everything है वो हम आपको अलग से share कर देंगे, the worst to worst the thing that can happen. So let's wait for it as to how it goes about. Okay. Shubham ji. Yeah, sir. So next question is on AI skills, career, and future readiness. So there are a lot of people who have joined us. कुछ लोग हैं who are CA, probably doing साथ में CFA L1 L2. Some are already done CMA. तो उनका questions है कि what is the right way for working professionals to upskill? Is there a mental framework to filter the noise? Because AI में तो अभी काफी noise है, बहुत सारे AI tools every day they are releasing. So how to create a mental framework to filter the noise? And if someone wants a career combining finance plus data science apart from quant finance, what other options exist? And इसके साथ में ही there are also कि will AI replace us in the near future? I think संजय सर ने इसके बारे में बहुत चीजों के थ्रू he has tried to give us a clear understanding, but then ये भी आया कि will AI replace us in the near future? And अभी जो सौरभ जी दिखा रहे थे AI, so is it will also be useful in tracking foreign companies and commodities? So probably my question will be a mix of it, but I mean the gist is key. How can they be future ready, and how can this upskill their career? Sanjay sir, you want to address, and then maybe I will add if there is something to add. See, it becomes repetitive sometimes. I think the first question which was asked by Shubhkant
where he spoke about college students. He also spoke about working executives. Even in my reply, I was hinting about the fact that when I'm meeting students in Bangalore, Bombay, Delhi, okay, many of them are chartered accountants who are in their mid 30s, I said, and they are not liking their quality of life. They are not. They know what is happening to them, neither in terms of the financial rewards they are getting, nor in terms of the future trajectory that they can see, nor in terms of the quality of work that they are doing. And it's a mess out there. People are wanting to shift. The reason as to why this analyst tag program came so urgently, in the sense it has to come, is because when I started meeting these guys, I was sitting over here and teaching, teaching, teaching. But when I went out of house and started meeting, I saw that this is a systematic problem. What are people doing? People who are college students, they are just thinking that हम लोग कॉलेज में कोई एक्टिविटी कर ले, कोई क्लब में शामिल हो जाए, विच इज ओके गुड. एट द सेम टाइम कोई इंटर्नशिप कर लें, ठीक है. एट द सेम टाइम कोई प्रोग्राम कर लें. प्रोग्राम में लेगेसी इश्यूज के कारण सभी जन क्लास 12 के बाद सीए फाउंडेशन ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है. दे मूव ऑन टू सीए इंटर या ड्रॉप कर देते हैं, वॉट एवर. और या कुछ जन तो बीकॉम के साथ कुछ करते ही नहीं है, एंड जस्ट कॉलेज एक्टिविटीज एंड समथिंग. तो आई थिंक बहुत जोर का स्पॉइलेज वहां पे एनर्जी का हो जाता है, इफ दैट इज द स्टेटस. जो लोग आगे बढ़ चुके हैं, बिकॉज दोस टाइम लेगेसी इश्यूज में मोर देयर, मैंने खासकर सीएस, वो लोग एकदम स्टकअप है एंड दे आर वांटिंग टू चेंज. बिलीव मी, दिस प्रोग्राम का इंटेंशन इज, इफ यू वांटेड टू शिफ्ट द ट्रेजेक्टरी ऑफ योर लाइफ, ओके, दिस इज द प्रोग्राम. बिकॉज यहां से आपको कंप्लीट इन्वेस्टिंग का अंडरस्टैंडिंग, हमारे जो 4 मॉड्यूल्स है उसमें, आई डोंट नो वेदर यू हैव लुक्ड एट द करिकुलम और नॉट, मॉड्यूल 2 का कोई पैरेलल नहीं है. पीपल लुक एट द फर्स्ट वाला, ओ यार वही एक्सेल फाइनेंशियल मॉडलिंग है. वो नहीं है, ठीक है ना. बिकॉज आने वाले टाइम पे दैट इज गोइंग टू बी नॉट इवन टेबल स्टेक्स. जो बीच वाला मॉड्यूल है, मॉड्यूल टी, दैट इज सुपर्बली डिजाइंड विथ डेप्थ, विथ 15 प्लस सेक्टर्स. और फिर मॉड्यूल 3 जो है, एआई कैसे उसको इनहैंस और ऑगमेंट करने वाला है, दैट इज देयर. एंड देन ऑल्सो मूविंग इनटू मॉड्यूल 4 विच इज करियर डेवलपमेंट. तो मेरे को लगता है कि मैंने कैसे समझाऊं, मैं आई थिंक मेरा 2 सेशंस हो गया. अभी आईएचसीएल का हुआ था, उस दिन संडे को हुआ था. This program, Analyst Stack, is going to be a game changer. Okay, it is going to transform financial education landscape in India. Okay, if you ask me, sir, who should do it, my answer would be who should not do it. Everybody should do it. Okay, believe me, everyone should do it. There are people who are having high aspirations. Like, the problem is that I always say that if even after so many years of independence, that नॉट, मैंने एस्पिरेशन जो है ना वो जगती नहीं है. पता नहीं, स्काई इज द लिमिट लोग सोचते नहीं है. दे कर्टेल देमसेल्व्स टू बस ये अपग्रेडेशन हो जाए, बस अगर 35 का था तो 50-60 पे पहुंच जाए जॉब का. आई थिंक दैट माइंड सेट इज नॉट, यू डोंट नो द पोटेंशियल दैट यू आर सिटिंग अपॉन. ओके, एंड यू शुड रीच फॉर इट. एंड एआई का रिप्लेस करने का तो बात ही नहीं आता. कोई भी टेक्नोलॉजीज जो आज तक आई है ओवर द लास्ट सेंचुरीज, वॉट एवर टेक्नोलॉजी, ऑटोज केम तो बात हुआ था, फिर उनका क्या होगा, चैरियट एंड ऑल दैट, वॉट एवर टेक्नोलॉजीज हैव दे रिप्लेस्ड समबडी? नो, देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट विच हैज टेकन प्लेस. यानी कि द सेम पीपल स्टार्ट अपग्रेडिंग, स्टार्ट शिफ्टिंग टू हायर लेवल ऑफ वर्क. टेक्नोलॉजी हैज नेवर एवर वर्सेंड human civilization. It has never ever, and AI will also not. So having that mindset, वो जो YouTube में पॉपुलर डाल देते हैं, आपके जॉब चले जाएंगे, ये चले जाएंगे, these are all, मतलब that is not the way in which a professional is supposed to think. You are supposed to adopt the technology and help it upgrade you. So that's what I would put. Please, Saurabh ji, add to it your experience and perspective. Yeah, sure. See, regarding this fear of job, see, it has always been there from the time accountants used to do things on paper, and then Excel came, then new things came. I think I was in job in 2015 and I was in share market. So I remember, because 16 में IT stocks का अभी जैसे बाजा बजा हुआ है, वैसे ही बाजा बजा हुआ था. Reason that time it was कि machine learning आएगा and then everything algorithms will do. And I was actually working there. I didn't feel that pessimism. But what happened is, every time when technology disrupts, one has to adapt. There are companies who have got destroyed, not today, 10 years back, 15 years back, 20 years back. जो सिर्फ back office BPO किया voice का, they are gone. Those who could adapt into building automated voice systems, intelligent systems,
they embraced the technology and they went ahead. They did with the help of NLP. So at every stage, there going to be disruption. Disruption will always be there. One who can learn, unlearn, learn, and progress, he is going to survive. So this is the, call it good or bad, that's the brutal nature of the world. ये सिर्फ इस कोर्स का नहीं है, किसी भी चीज का, किसी भी करियर का। जो सर्वाइव, जो अडॉप्ट करते हैं, जो अपस्किल करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। सो दैट इज हाउ यू हैव टू टेक इट। बाकी बियॉन्ड अ पॉइंट nobody knows anything, but yeah, that is how it is, because I have a lot of friends. I worked in the industry, I worked in IT till 2021. So though I am not in 100% touch, but I still, from an investment view, I keep talking to my friends, my bosses. Yes, it is going to have certain kind of impact, but there is always a positive side. आपको क्या लगता है, ये पूरा एजेंटिक AI हवा में काम करने वाला है? Somebody is going to maintain it, somebody is going to write it. That is why I told some of these skills are going to be very important skills. How it is working is, companies are telling to employees that give me 20% more productivity with the same budget. That is how it is happening. That is how it is changing. So those kind of things will happen. Social media has always a way of exaggerating. 2 week पहले तक किसी को नहीं पता था, आज सबको पता है. So that is how you have to take it. There was one more question around how to differentiate the noise. So that is why I highlighted about prompt engineering and all. See, everybody will give you 20 prompts to analyze company. Everybody will give you 20 prompts to analyze sector, 20 prompts to do this. How do you know which is better? And that is why the theory foundational skill is very, very important. So that is our intent, and that is why it's a 20-hour course module where we are going to touch upon all of these things. So our job and our objective is to help you to ensure that how you remove noise from AI, and that is why we are having this curriculum. And it's not only about this tool or that tool, but what is the foundational skill to work on any use case, any case study. I can teach you, we can teach you 10 case studies, but when you go in case industry, you will get 5 new case studies. So our job is to ensure you have the right foundation to think about any case study and deliver on your own, rather than again looking back for a new prompt or that. So that is how we plan. I think I have covered the additional things which I had in my mind. Yeah. Mostly everything is covered. I'll just like to add one thing. Yesterday, I was talking to a developer in HCL Tech. Okay. And this guy has spent around 20 years in developing code. Okay. And he has almost touched all tools which are available. And he was telling me that, Sanjay sir, मैंने जो भी लर्न किया है 20 साल में, अब मेरे कोई काम का नहीं है. इट इज ऑफ नो यूज टू मी. अब ज्यादा जो काम आने वाला है वो ये कि मैं क्या क्लाइंट से बात कर सकता हूँ, उससे कम्युनिकेट कर सकता हूँ, उसका समझ सकता हूँ. माने मैं जो कोड करता था ना, वो जो 20 साल तक, वो मेरे काम नहीं आएगा. काम आएगा मेरे skills of communicating, understanding with the client. So it was a shocking statement, and coming from a very person of a high repute. Okay, it was not a loose statement. So I'm trying to say कैसे phenomenally change हो रहा है. एंड ये तो यंगस्टर्स के लिए तो बूम है, बोल रहा हूँ, बिकॉज जो करंट जनरेशन है, दे आर गुड एट टेक, दे आर गुड एट एक्सेप्टिंग, इनोवेटिंग एंड ऑल दैट. तो इट इज अ वंडरफुल एरा इन विच वी आर. एंड मतलब दिस वाज अ वंडरफुल सेशन. आई थिंक सौरभ जी ने जब लास्ट के मैंने, इफ हिज प्रेजेंटेशन वाज टोटल से 30 मिनट्स, द लास्ट का 20 मिनट्स वेयर द एप्लीकेशन वाज देयर. I think anybody can see the glimpse of what all is in store for them, and what they got to look forward, okay, into this program. So I think, Shubkant, we will end it over there, because otherwise repeated questions will be there, and we know on the screen the phone number is flashing, and we are repeatedly telling prospective candidates, the whole community, to please move forward, dial at that number and get perfect guidance which is customized, because आपका particular situation क्या आपको लगता है उसके लिए guidance चाहिए, reach out to us. What is the issue? And before we will before I stop speaking, I'll just give you the inference that इंडियन होटल्स के ऊपर एक केस स्टडी मैंने किया था, ठीक है, बट उसमें एआई को यूज नहीं किया था, ठीक है. अगर उसको एआई को यूज करते, और मैंने, if Saurabh ji was also sitting with me, he could have made it to go into a different level altogether. We are going to have another discussion on the aviation sector. Okay, aviation sector, Indigo का जो fiasco हुआ था दिसंबर में, उसका prolific case study होने वाला है. I think not in this week, but in the next week. उसका भी Zoom का link CTA circulate होगा, आप लोग join कीजिएगा. And this learning phase is going to continue. Okay, our institute right now is into a different explosive mode. We are going to just bump upon and just introduce
knowledge per knowledge for anyone who is hungry in terms of upgrading himself and who's not capping his upper limits. Okay. So this is what I had to say. Saurabh, your concluding remarks? I think, sir, you have summarized it well. I think this is the time to learn new things, and I think the time is perfect. So, yeah, I mean, that is what I had to say. Okay. So I would say thank you all once again for being part of today's session. We hope this webinar has helped you understand how the Analyst Tech program brings together the finance, analytics, and technology to build a powerful industry-ready skill sets. We have already shared the program link, the relevant resources in the chat. Do call on that number to uh, cater your questions. A big thank to our speakers for their insights and to each one of you for your active participation. We look forward to seeing you in the program and welcoming you to the many more such learning sessions. So wishing you a wonderful day ahead. Thank you all. Thank you. Thank you. Thanks, Sanjay sir. Thanks, Shukranji. Thank you, everyone. Thank you. Everybody wants to create wealth, but unfortunately, more than 90% of investors or traders, they fail in the market. And there are three reasons. The first, they don't have the required foundational knowledge. Second, even if they have the required foundational knowledge, which they may get again from books and resources, they fail to apply the knowledge in the real investing or trading market world. Lack of a system also creates lack of discipline. At Scientific Investing, our endeavor is to provide all these three, the foundational skills, the application-based skills, and a system so that investors and traders can learn not only the theoretical, but the practical aspect of how to invest or trade in the market. At Practitioner, we provide systematic investment learning framework. First, our theoretical-based modules, which is our basic and advanced foundational content, which covers the whole financial and technical analysis along with advanced topics. Then application-based modules, which has multiple live case studies, 16 plus sector case studies, 150 plus company case studies, 24 months of market case studies to gain and apply all the theoretical knowledge in a real market world. Also, we provide our system SIMBA, where one can track the overall market, indices, sectors, industries on various momentum-based systems and relative strength-based systems. Also, we provide multiple scanners leveraging stage analysis, price volume analysis concepts. Further, we provide enough tools and resources in the form of checklists, in the form of frameworks, in the form of scanners, in the form of Excel tools, in the form of trading view indicators, in the form of AI prompts, which helps one to have all the right set of tools and resources to excel in his learning journey. I welcome you all to Practitioner and wish you all the very best in your learning journey. So I hope the video was useful and you could understand the usefulness of AI required in the investing journey. We'll keep making more videos. If you like our work, do like, subscribe, and share with others. Thank you.